कुछ भी करो आप लाइफ में, फेलियर आएगा, टेक इट एज अ लेसन एंड हिट बैक हार्ड. लाइक वी से इन द आर्मी की बॉडी बेल्ट और बूट जितना रगड़ोगे उतना चमकेगा, है ना. यू कैन एंटर द आर्मी एज अ शीप. इट इज द आर्मी दैट विल मेक यू इनटू अ वुल्फ. मेंटल टफनेस कम्स फ्रॉम पेन, प्रेशर एंड स्ट्रगल. द वॉरियर माइंडसेट इज बेस्ड ऑन विनर्स माइंडसेट. आप कितना हद तक जा सकते हो जीतने के लिए. फौज में कोई लायंस एंड टाइगर्स नहीं है, कोई रैम्बोज नहीं है. तो वी डोंट नीड टाइगर्स कि भाई कोई बंदा अकेला सब कुछ कर लेगा. वी डोंट नीड दैट. वी डोंट नीड लायंस कि भाई माई पीपल विल डू द हंट एंड आई विल एंजॉय द मील. ऐसा कुछ नहीं. कोई भी बंदा अगर आप डिसऑनेस्ट हो आपको फॉलो नहीं करेगा. इफ यू आर सेल्फिश कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा. दे विल नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय यू. इंडियन आर्मी ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट. द लास्ट पीपल टू लुक एट इज द आर्मी. If army loses, if army cannot perform, the country cannot perform. People can face difficulties. People can face challenges, work pressure. Everything is fine. People can handle. But what people cannot handle is loneliness. If a person feels that he is lonely in a workplace, he cannot perform. Indian Army as an organization is the highest performing organization not only in this country but in the world. It is because of we take care of each other. We'll never leave each other alone. Army officer कितना सैलरी मिलता है एंड आई वांट टू जॉइन द आर्मी फॉर द सैलरी, देन आई एम सॉरी, आप मत आइए. आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट फॉर द मनी. इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स अ कमिटमेंट. आप यहाँ पे सैलरी के लिए नहीं आ रहे हो. फॉर मी लाइफ स्टार्टेड इन मॉर्निंग 5 यार, है ना. दैट इज हाउ आर्मी लाइफ इज. यू आर फुली एक्टिव. यहाँ पे बाहर आके देखा 9-10 बजे तक कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है. लोग निकलते ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा है. नोबडी इज देयर इन ऑफिस. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक रियल लाइफ हीरो मेजर भास्कर शर्मा. वो एक ऐसे इंसान जो एक फौजी के रूप में भारत माता की सेवा कर चुके हैं और अब सिविलियन लाइफ में अपने डेयरिंग कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस और डिसिप्लिन मिलिट्री लाइफ के लेसन्स का यूज करके लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और रेजिलियंस सिखाने का काम करते हैं. आज हमने उनके साथ काफी इन डेप्थ बातें की और जाना उनकी आर्मी जर्नी के बारे में, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और चैलेंजिंग मिशंस के बारे में. साथ ही ये जाना कि कैसे वो आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अब लोगों को मेंटल क्लैरिटी, रेजिलियंस और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद कर रहे हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये फुल ऑन मोटिवेशन से भरा एपिसोड विद मेजर भास्कर शर्मा. हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट. आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है दैट यू आर विद अस एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, अ लॉट ऑफ रियल लाइफ circumstances and situations which actually happened in your life. But before that, before we start, before we know more of the action that you've been involved in, sir, ये journey start कैसे हुई? What and who inspired you or influenced you to, take part in the Indian Army? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुव, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आई एम ऑनर्ड एंड आई एम हम्बल्ड. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आई एम हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. माय जर्नी इनटू द आर्मी अगर आप पूछ रहे तो सी, मैं कम्प्लीटली एक सिविलियन था. तो मेरे दूर दूर तक मेरे रिश्तेदार या एनीबडी, माय फ्रेंड्स, कोई आर्मी में नहीं था. तो एंड इट वाज लॉन्ग आफ्टर, मैं जब ग्रेजुएशन मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो उस टाइम वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे को आर्मी के बारे में किसी ने बताया. ओके. तो इट वाज वन ऑफ माय फ्रेंड. तो हम लोग साथ में कॉलेज में बॉक्सिंग करते थे. तो उस टाइम एज मोस्ट पीपल वर उस ज़माने में कि भाई पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली है, Right. अभी करना क्या है. तो करियर वाइज इतना आइडिया नहीं था कि करना क्या है. तो वी स्ट्रगलिंग. कोई बोलता है MBA कर लो, कोई बोलता है जॉब कर लो. तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही केम एंड टोल्ड मी कि भाई व्हाई डोंट यू थिंक कि करियर, द आर्मी एज अ करियर और आर्म फोर्सेस. तो वहाँ पे आपको एडवेंचर मिलेगा, वहाँ पे आपको यू विल गेट टू डू थिंग्स दैट अदर्स कांट इवन इमेजिन. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़. तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया. आई लुक्ड ओवर द इंटरनेट कि क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम्स क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एकेडमीज़ क्या क्या है. तो उस टाइम, दैट वाज द टाइम जब मेरे को पता चला कि NDA, IMA, OTA, these are few institutes through which army officers get trained. तो उससे पहले मुझे कोई आइडिया ही नहीं था. It was almost when I finished my graduation, imagine. तो thereafter, so
उसके बाद it was a cumulative interaction with the environment. कोई एक सिंगल इंसिडेंट या कोई एक सिंगल पर्सन जिसने मुझे मोटिवेट किया और गाइड किया कि गो एंड जॉइन द आर्मी, ऐसा कुछ नहीं था. सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई फाइनली आई वाज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन. तो आई वाज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन हियर इन दिल्ली. ओके. तो and Delhi being what it is politically very volatile. And university में मुझे that was the first time I got introduced to the politics of intellectual left. वहाँ पे मेरे जो कश्मीरी दोस्त थे उनके ideas about आज़ादी and all those things. तो मैं एक बार श्रीनगर यूनिवर्सिटी भी गया था for some project. ओके. और वहाँ पे when I was living with them in their hostel. So वहाँ पे ना उनका एक ही डिबेट था. And there were only two opinions. एक था pro आज़ादी, एक था pro Pakistan. So there was no third kind. Okay. So all these things, it was kind of very hard hitting for me. Or before that, there was 26/11. There were a couple of bomb blasts. There were a couple of terror attacks, including my hometown in Guwahati. Right. तो ये सारे चीज़ ना, it was shaping my mind in a way. कि how am I contributing? What am I doing? And finally, the icing or the cherry on the cake was there was one professor of mine who ex-army officer थे. And so Colonel Saab was somehow different from the rest whenever I was observing him. The way he talked, the way he taught us, the way he conducted himself was somewhat different. तो मेरे को लगा था कि बनना है तो इसकी तरह बनना है ना. And him, without telling me कि you go join the forces or motivating me to prepare for armed forces, I was indirectly somehow shaping up myself, my mindset towards the army. And I used to manifest every time throughout for a very long period of time कि मैं अगर फौजी होता तो कैसा होता. I used to imagine myself in uniform. I used to imagine myself doing all those things that army personnel would do. And throughout that process, I've tried for army many times. Right. तो मैंने काफ़ी फेलियर्स देखे. बट दैट वाज अगेन माय फर्स्ट लेसन बिफोर जॉइनिंग द आर्मी इटसेल्फ कि फेलियर्स आर जस्ट लेसन्स लर्नड. एंड एवरी टाइम आई वेंट फॉर माय इंटरव्यू और एनीथिंग तो कुछ सीख के आता था मैं वापस. एंड आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कि मैं अपने पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप कैसे करूँ. तो वो करते 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 एंड देन फाइनली आई थिंक इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट. तो उस टाइम मुझे मिल गया था. And I joined the Officers Training Academy as an SS officer. So वहाँ से मेरा आर्मी का जर्नी शुरू हुआ. As you only said, अभी आपने एक बात बोली कि 4-5 attempts, बार फेलियर फेस करना, coming from a civilian background, no prior military guidance, no knowledge about करना क्या है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आगे बढ़ेंगे. What was the motivation? क्या चल रहा था दिमाग में कि यार यही करना है? See, Dhruv, motivation is there are two factors involved. One was घर से pressure आ रहा था कि कुछ करो. And when I told my father कि I think I will join the army, he never thought that I can do that, right? So he was not kind of very happy. ये तुम्हें कुछ पता ही नहीं है आर्मी के बारे में, you have no guidance, no nothing. कैसे कर लोगे तुम? नहीं होगा तुम्हारा, get a job, do MBA, do this. So that was a kind of challenge for me. So a little bit of motivating factor came from that angle. And of course, when I got commissioned, he was very proud to me, proud of me proving him wrong. That's a different story altogether. But second thing is, like I said, मेरा जो environment के साथ जो interaction था. Because आप अगर एक चीज़ में focus कर रहे हो, आपके mindset, आपका कंप्लीट आइडिया एंड फोकस उसी की तरफ ड्राइव होता है, राइट. तो आपका पर्सनैलिटी बिकम्स समथिंग लाइक दैट. वॉट एवर यू वांट इन लाइफ, अगर आप उस चीज़ में फोकस करोगे तो आप इनवेरिएबली, नोइंगली, अननोइंगली, योर पर्सनैलिटी बिकम्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू वांट टू बिकम, राइट. तो ये सारे चीज़ें जो है, लाइक आई सेड, क्यूमुलेटिवली इम्पैक्टेड मी एंड दैट केप्ट ऑन मोटिवेटिंग मी. एंड अनदर पॉइंट, नोबडी लाइक्स फेलियर्स, राइट. Nobody. तो दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दो इसे, या तो यू गेट बैक टू इट. एंड आई चोज द ऑप्शन दैट आई विल गेट बैक टू इट. सो वट एवर इट इज़ कि आप कुछ भी करो ज़िंदगी में, या कुछ भी करो आप लाइफ में, फेलियर आएगा, टेक इट एज अ लेसन एंड हिट बैक हार्ड. तो मैंने वही किया. आई केप्ट ऑन, आई वॉज रिलेंटलेस, आई वॉज गोइंग बैक.
Every time I was learning new stuff, and कैसे मैं अपने personality, how can I improve, how can I develop into whatever the requirement that they need. Right. तो उस हिसाब से I just kept working on it, and that's how I got motivated. So you started training in IMA Chennai. OTA Chennai. OTA Officers Chennai. Training Academy. Officers Training Academy Chennai. Chennai. And जितना मैंने सुना है कि it's one of the most difficult Yes, places it is. to get trained at. It is because वहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो आपका जो वेदर कंडीशंस है चेन्नई में, हॉट एंड ह्यूमिड, इट्स नॉट वेरी कंड्यूसिव ट्रेनिंग के लिए. तो यू आर फाइटिंग द वेदर इटसेल्फ एंड द हार्ड ट्रेनिंग दैट यू हैव टू रिगरसली डू वहाँ पे. तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऐसा वेदर कंडीशन में आप करो. सेकेंड थिंग, OTA में जो आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, इट इज़ शॉर्टर. IMA में अगर लोग पीपल आर डूइंग आई थिंक फॉर अबाउट 18 months, 1.5 years, वहाँ पे हम 1 साल में वी आर ट्राइंग टू कवर द एंटायर थिंग. सो अगर आप जो एक बंदा आप 1.5 years ट्रेनिंग करके आ रहा है एंड यू हैव टू कम अप टू दैट स्टैंडर्ड, दैट लेवल, तो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा उसमें. सो इन दैट 1 year पीरियड द ट्रेनिंग करिकुलम इज सच कि आप वो सारे चीज़ें सीखे, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू इम्बाइब एंड इनकलकेट टू बी द ऑफिसर, राइट. तो उसमें ज़्यादा घसा लगता है. So it is known for, the academy is known for its what I would say, Ragara parade, है ना. तो they make you tough. तो ultimately academy में क्या होता है, it is not that they will teach you a lot of tactics and how to do military operations. ऐसा कुछ नहीं है. There they teach you the basics. The basic as in the mindset that you need to have. एक military officer के लिए आपको जो mindset चाहिए उसमें focus करते हैं. That mindset needs to revolve around trust. That mindset needs to revolve around camaraderie, है ना. ये जितनी भी चीज़ें हैं, to be a good leader, है ना, how you cooperate with your team, how you lead your team. तो ये सारी चीज़ें they rigorously train you on that. And why are military academies so difficult? Rigorous training क्यों होता है, punishments क्यों मिलते हैं? Because at the end, as a military officer आपको responsibilities दिया जाता है, right? And with responsibilities, when somebody is giving you power और आपको responsibilities मिलते हैं, you are held accountable. You cannot escape that. So that thing is ingrained in your mind that आपको कुछ काम दिया जा रहा है, आपको कुछ powers दिए जा रहे हैं, आपको एक responsibility दिए जा रहा है. If you don't perform according to the expectations and the norms of the military, you're accountable for it. और आपको दिया जाएगा. पनिशमेंट्स बार बार मिलेंगे ही मिलेंगे आपको. सो दैट इज इट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड. एक तो आपको ठीक है, बॉडी वाइज यू आर गेटिंग मोर एंड मोर फिट, लाइक वी से इन द आर्मी की बॉडी बेल्ट और बूट जितना रगड़ोगे उतना चमकेगा, है ना. सो दैट वे इट्स फाइन. बट अदरवाइज दैट माइंडसेट दैट इज बीइंग बिल्ड कि अकाउंटेबल, यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एवरी लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज गिवन टू यू. यू कैन नॉट एस्केप दैट, है ना. And that standard and that expectations will always have to be met. I think that's where the perception changes. It does. That is what academy does. So like I said, I tell a lot of people, there are a lot of youngsters who comes and ask कि sir SSB के लिए कैसे. SSB is basically Services Selection Board, right? And where they conduct interviews. So it is, by the way, the longest interview in this country, I think perhaps in the world. अगर आपका इंटरव्यू 2-3 घंटे का चलता है कहीं और, इन एनी कॉर्पोरेट और एनी इन UPSC और एनीवेयर एल्स, वहाँ पे इंटरव्यू 5 दिन का चलता है, ठीक है. Wow. एंड 5 दिन में द ओनली थिंग दे लुक एट इज योर साइकोलॉजी. क्या सवाल पूछते हैं? They are not. I will come to that. Yeah. They are not looking at your intelligence. वो नहीं देख रहे कि आप कितना स्मार्ट हो, कितना जानते हो, कितना स्ट्रांग हो, कितना फास्ट हो. They are not interested in all that. Okay. They just want to know that तुम्हारा mindset कैसा है. Are you a person who can be trained, right? And they're looking for very small little leadership qualities, because at the end of the day, आप जब फौज में आओगे तो आपको you have to command men, you have to lead men, right? And you have to lead men into difficult situations where the cost is not anything that is tangible, right? In terms of money or in terms of profits or anything. The cost is directly the most important thing in the world, that is life, right? So if अगर कोई आपको इतना एक important चीज़ आपके हाथ में दे रहा है, तो you need to have certain True. leadership qualities, right? तो
तो वो अगर आपके पास है थोड़ा बहुत, अगर वो देख लेता है तो दे विल कैच यू, दे पुट यू इन द एकेडमी, और वहाँ पे आपको मोल्ड किया जाएगा, प्रॉपर्ली फॉर्ज किया जाएगा, यू नो, लाइक यू फॉर्ज आयरन, उस हिसाब से फॉर्ज किया जाएगा. So I tell these guys who come to me asking for SSB tips and things like that, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सी आप इतना सोचो मत, ठीक है. इफ़ यू आर जेन्युइनली अ गुड पर्सन and you have certain leadership qualities, you can enter the army as a sheep. It is the army that will make you into a wolf, into an alpha wolf, right? Because we in the army, we work as wolves. We work in packs. We hunt as teams, right? And it is the alpha wolf who is the leader, the officer, and he has to constantly prove. आपको आपकी टीम को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई I am capable of leading you. And the team will have to accept you as a leader. So the entire, you know, the way a wolf pack operates, same thing जो हमारे फौज में होता है. फौज में कोई lions and tigers नहीं है, कोई रैम्बोज नहीं है, तो we don't need tigers कि भाई कोई बंदा अकेला सब कुछ कर लेगा. We don't need that. We don't need lions कि भाई मेरे, you know, my people will do the hunt and I will enjoy the meal. ऐसा कुछ नहीं है. Indian Army officers lead from the front. We always set examples for our people to follow. राइट. तो ये सारे चीज़ें जो आपको एकेडमी में मोल्ड किया जाता है. सो हाउ डिफिकल्ट डू यू थिंक इज द मिलिट्री लाइफ? कितना मुश्किल है मिलिट्री लाइफ को अडैप्ट करना? नथिंग इज डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड. अगर आप कुछ चाहते हैं, है ना, तो यू बिकम दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना. तो हाँ, मिलिट्री लाइफ इज टफ बिकॉज इट इज सपोज टू बी टफ यार. एंड इन मिलिट्री यू नीड टफ मेंटालिटीज, देयर इज नो डाउट. और मैं एक और चीज़ मैं जो बोलता हूँ ना टू माई corporate clients, जब mental toughness की बात आती है, it is not something that you can train. Right. आप उसको mentally tough कुछ सिखा के नहीं करा सकते हो, बुक्स पढ़ा के नहीं करा सकते हो. Mental toughness comes from pain, pressure and struggle. And it is born. It is never, you know, created और आपको सिखा के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं. It is always born from within. आप जब pain, pressure, struggle face करोगे, that is the only time when you can be mentally tough. And army wants you to be like that. इसीलिए आर्मी आपको हमेशा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ही रखेंगे. They will always keep you on your toes. आप इस जगह में है, next moment they'll deploy you somewhere else. Next time, you know, once if you're doing counter insurgency operations एक जगह में, आपको उठा के कहीं पे disaster relief, you know, humanitarian assistance में डाल देगा. वहाँ से उठा के आपको कहीं और डाल देगा. Then again you're off to something else, right? So that is why they want people to be tough. Right? Because you have to keep on adopting and you can't say no. Because as an organization, हमारा काम है कि भाई, yes, at the end of the day, Indian Army's role is that it is a war machine and it is to fight wars, right? That is our professional job. But at the end of the day, it is also the last resort for anything in this country. आपका कोई भी machinery, you know, collapse होता है, the last people to look at is the army. If army loses, if army cannot perform, the country cannot perform, right? तो उस हिसाब से you can never say no to anything. So you'll have to do everything professionally. It is not just about doing professional things, but doing everything professionally is what matters, and that's what defines the Indian Army. हमें आप कुछ भी काम दे दोगे, हम very professionally उसको करेंगे, wholeheartedly करेंगे, and we will come up with results. So that is why mental toughness is important. तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. हाँ, आर्मी लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज सपोज टू बी डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको, यू नो, इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अडॉप्ट, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में हो और उस एनवायरनमेंट को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. ट्रू. एंड दैट इज़ व्हाई वी आर देयर. इंडियन आर्मी इज़ द लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी. यहाँ पे कोई कंस्क्रिप्शन नहीं है, लोग खुद जाते हैं वहाँ पे, है ना. दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द आर्मी, ऑफ इंडियन आर्मी, राइट. तो वहाँ पे लोग खुद ही जाके खुद ही बोल रहे हैं कि यस, आई एम रेडी टू डू दिस जॉब. I am ready to be what I'm supposed to be, है ना. तो अडॉप्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, because all of us are volunteers, all of us want that. So what, मतलब मेजर डिफरेंस क्या होता है शॉर्ट कमीशन जो ऑफिसर्स होते हैं एंड यू नो द अदर्स? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑफिसर्स? The difference between short service commission officers and permanent commission officers Yes. is simple, that short service commission officers को एक ऑप्शन दिया जाता है. They have a mandatory service period of 10 years. Okay. तो उसके बाद आप ऑप्शन चूज कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू स्टे बैक, टेक परमानेंट कमीशन एंड सर्व फॉर अनदर 10 years, that is 20 years, when it becomes pensionable service for you. Otherwise, if you want to, you know,
टेक रिलीज, ऑप्ट आउट. आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आप हाँ ठीक है, आई विल टेक रिलीज एंड डू समथिंग एल्स इन सिविल वर्ल्ड. So this is the option. That is the only difference. Other than that, everything is same. There is no difference at all. There's no difference. It's just the service period is difference. Sir, being an infantry officer with the Dogra regiment, how was that like? कैसा क्या एक्सपीरियंस कैसा था? डोगरा रेजिमेंट आपने जिस फॉर्म्स फिल किया होगा तो उसमें आपने ऑप्शंस में लिखा होगा. See, for me, I was very lucky. Lucky in a way. I was baptized in fire. The moment I got commissioned, I was dropped in counterinsurgency. Okay. And so that way I got to see action at a very early age. So उस हिसाब से I was lucky also, and I'm very happy to be part of such a great regiment, right? और option though, I always opted for infantry. I always opted for infantry because I wanted to be part of the combat arms. Combat arms क्या है? Basically Indian Army में there are 3 combat arms. Right. आपका एक मैकेनाइज्ड होते हैं, दैट इज योर टैंक्स एंड BMPs एंड ऑल दैट, तो आर्मर्ड बोलते हैं हम उसको. सेकंड इज द आर्टिलरी, बिग गन्स, 155 130 mm गन्स जो होते हैं, बोफोर्स वगैरह होते हैं. एंड थर्ड इज द इन्फेंट्री, द फुट सोल्जर्स, राइट? एंड आई वांटेड टू बी दैट. आई वांटेड टू बी द पर्सन आउट देयर इन द फ्रंट, ऑक्यूपाइंग ग्राउंड, फाइटिंग विथ माय मेन. तो यस, आई गॉट व्हाट आई वांटेड, so I did what I could do, and I tried my best. आपके हिसाब से नंबर 1 रेजिमेंट कौन सा है? There is no number 1 regiment. Why so? There cannot be, because every regiment has done exceptional service throughout. If you see post independence, आपके जितने भी regiments है of the Indian Army, है ना, everybody has fantastically done in every operation they could. There is nothing called best regiment. They cannot be actually. सर आपको कैसे लगता है कि इन्फेंट्री जो है, हाउ इज इट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रोल्स एंड चैलेंजेस? Of course, the role itself is different, first of all, right? तो आप armored में हो, see, I'll give you a very simple example. हाँ. And that will sum it all. If you ask an armored guy कि what is your weapon, वो बताएगा कि मेरा tank. If you ask an artillery guy what is your weapon, वो बताएंगे कि my gun. You ask an infantry guy what is your weapon, he will say my men. Because the infantry guy has to fight not just last round, last man, last round. Even if he's shot, he has no weapon. You'll fight with his bayonet, his knife, grenades, hands, legs, whatever. But he is there to fight till the end. That's what separates infantry from rest. At the end, we are dealing with people, and our people, our team, are the weapons. The more you invest on them, the more you turn them into that ultimate fighting machine that you want them to. It is going to perform the best. So our thing about infantry is that हाँ हमारा तो सब कुछ हमारा टीम ही है यार, हमारा our men. That's what matters. That's what separates us from the rest. सर ट्रेनिंग के टाइम तो सबके बहुत बहुत फन होता है. आई हैव हर्ड दैट दैट इटसेल्फ इज अ टाइम जब एक नॉर्मल इंसान फौजी बनता है और बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, बहुत फन होता है, बहुत सारी मेमोरीज होंगी. बट एज यू सेड कि तुरंत ही आपको एकेडमी से निकलते ही आपको पोस्टिंग मिल गई थी, आई थिंक इन नॉर्थ ईस्ट, राइट? तो फ्रंट में जाके कैसा लगता है? हाउ डज दैट फील? So if going back to the academy, I'll take it. I think your question is 2 parts, right? Yes. तो मैं पहले अगर academy का part आप पूछोगे, memories, yes, memories तो बहुत सारे हैं, because that is where you actually get to learn what is bonding, what is camaraderie, है ना? और इफ़ यू से दैट बहुत फ़न है, हाँ फ़न है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट यार. आप किसी को भी पूछोगे कि एकेडमी में भाई तू एक दिन एक्स्ट्रा रुक जा, वो बोलेगा नहीं. ठीक है, सो इट्स लाइक दैट. रगड़ा लगता है ना, बहुत गंदा रगड़ा लगता है. हाँ, तो होना ही है, दैट्स पार्ट ऑफ. वर्स्ट क्या हुआ आपके साथ एकेडमी में? वर्स्ट क्या हो सकता है? आई मीन ऑफ कोर्स रगड़ा इतना होता है कि यू ब्लीड, you get burned because वो जो road है, it's a blacktop road. Yeah. Midday, hot afternoon, you're rolling there, you're doing all that vertical tank and all that. आपका यहाँ पे
you're getting burned here, you're getting burned there. और वहाँ पे 0 point है एक ड्रिल स्क्वायर के पास जहाँ पे nails वगैरह है, glasses वगैरह. So if you're rolling on that, obviously you'll get stuck, you get cut, you get you bleed. तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है वो. बट एक्सट्रीम ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो सबको मिलता है वो. तो सबको पता, इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल. तो सो दैट इज़ ओके. बट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एकेडमी दैट आई वांटेड टू मेंशन इज़ वहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाया जाता है कि वन फॉर ऑल फॉर वन. अगर कोई एक बंदा मिस्टेक करेगा तो सबको रगड़ा मिलेगा. ठीक है. Okay. So it's like that. Now, why that's so? Now, it has got a very important psychological aspect to it. Why do military does that? एक तो ठीक है, I mean, bonding, team spirit, ये सब तो है ही. But apart from that, if you want a high-performing team, है ना, people can face difficulties. People can face challenges. ठीक है. Work pressure. Everything is fine. People can handle. But what people cannot handle is loneliness. If a person feels that he's lonely in a workplace, he cannot perform. Right? Okay. Right? You're getting the point? Yes, I'm getting the point. फौज में it is ensured to us again and again कि you always have to take care of each other. And you'll have to make them believe that no matter what happens, I will be there for you. And you'll never be lonely. And that is the reason, one of the reasons why the Indian Army as an organization is the highest performing organization, not only in this country but in the world. It is because of we take care of each other. We'll never leave each other alone. तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी विल नेवर मेक एनीवन फील लोनली. दैट इज़ वाई हम लोग टीम्स में इसलिए काम करते हैं. एक टीम जो है एक फैमिली की तरह है. What does the term family mean to you? Family to me in army, see, I'll tell you about what happens in operations, right? Family is based on आपका दो चीज़ें very very permanent है. One is the strongest emotion in the world, that is love, right? दूसरा is trust, right? You'll always trust your family, you'll always love your family. The same two elements आपके जो military units है, military teams है, वहाँ पे भी same ये दोनों चीज़ें that is the foundation of anything there. So that's how we correlate, we can correlate families. कैसे होते हैं families. तो for example, मैं एक आपको story बताता हूँ कि there was I have to do a room intervention, right, in one of the operations. तो उसमें we are getting mixed intel कि जो militant अंदर है he's dead. So and there may be hostages. And तो अभी हम उसको कैसे operate करें? We were waiting for a long time. And my CEO was a very sensible person. He said that we will cordon the place and we'll stay there for as many number of days if required. But वो incidences ऐसे हुए कि at the end of the day he decided कि ठीक है आप room intervention कर दो. And when I was there, when me and my team went for the for the final breakthrough, तो उसमें क्या हुआ कि एक घर था उसमें दो there were two doors. तो we knew that एक साइड में जो है वो militant है because that was where from where he was firing. वो फायर कर रहा था, ग्रेनेड फेंक रहा था. तो वो एग्जैक्टली नहीं कि ये यहाँ पे होगा 100%. और सो वी barged into the other room. Okay. ठीक है. The moment we barged in and then we saw that room was clear. So दूसरा जो रूम था we were 100% sure and there was a connecting door in between. 100% sure कि भाई ये जो है this is the place where he is going to be. Right? He is there. We all knew it. And he, the one who is inside that militant, exactly knows that हाँ ये रूम में अपना फौज आ चुकी है. And next that they're going to do it, they're going to barge into this room. Right. ठीक है. तो उसमें क्या हुआ? Now as a military leader, in such high intensity and high octane action, you'd always want to save your men. Right. Right. तो उस point में क्या हुआ था? We knew that guy knew. We are going in for the final assault. उसको क्या करना है? वो मरने से पहले एक burst खोल देगा, है ना? Some of us will get shot. Correct. So I was the point man. And I was to go in first. And my buddy, he was to break open the door. He would break open it, I would go in. But what happened at that point of time is he broke open the door. He
pushed me behind, took his, assault rifle, and he barged in at that point of time. So imagine, आपको पता है कि वहाँ से अगर वो बंदा ready बैठा हुआ है, he is going to shoot you. Right. But whereas I was supposed to do that, a leader is willing to do something like that for the team, but the teammate says no, नहीं साहब, आप आगे नहीं जा सकते, है ना, आपको कुछ हो गया, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उसके दिमाग में यही आया था कि साहब को कुछ ना हो जाए. ही पुश्ड मी बैक, ही टुक द वेपन आउट एंड ही वेंट इन फर्स्ट. तो लकीली the Milton was already shot, he died and nothing happened. But that is love. That is love for each other. It's such a strong emotion that आप मर मिटने को तैयार हो यार एक दूसरे के लिए. So that happens either in families or it happens in military units. That is why we call military as our family. हम जो करते हैं साथ खाना पीना सोना, everything together, है ना. And that's what defines army as a family, and we always take care of each other. आपके personal problems हो, आपके professional problems हो, everything is taken care. And that's what we feel at home. We have one family at home and the other family is our unit. What were your primary responsibilities and services like a day in your life? See, my 90% of my service is in field. So मैं तो या तो operations में था या तो patrolling में था. मेरा मतलब maximum life मेरा उसी में निकल गया. Right? So if you ask me for that kind of lifestyle, I was lucky that way. I was lucky to be in, my service record has been such that कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा feel मिला, है ना. So I was doing what I always wanted to do. उसमें आपका कोई routine नहीं है कि आपको सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, nothing like that. आपका 24 hours you're on. रात को भी आपको कहीं जाना है, कुछ इंटेल के लिए आप जाओगे. दोपहर को अगर आपको ऑपरेशन लॉन्च कर देना, आपको करना पड़ेगा, है ना. एंड व्हाट बेस्ट वे यू कैन गो, है ना, क्योंकि द मोमेंट यू मूव, द मोमेंट फॉर्ज मूव्स, पीपल गेट टू नो. So how can you minimize those signatures? That is very important. तो my life तो maximum उसी में निकल गया कि आप या तो operations या तो in gathering या तो patrolling in those high altitude areas. तो yeah, so my maximum it's been like that. How many operations? कितने operations आपने अपने throughout your service कितने operations आपने किए? Yeah, it's very difficult to say. I mean, फिर भी there would be a number, right? ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप किसी भी ऑफिसर से पूछ लो, ये नोबडी काउंट्स देयर ऑपरेशंस. तो सीआई में तो रिगरसली एक के बाद आता ही रहता है. एंड लेट्स से अगर आप 100 ऑपरेशंस करोगे उसमें से शायद 5 or 6 विल बी सक्सेसफुल, है ना. तो बट देन यू विल हैव टू कीप लॉन्चिंग देम. How many successful operations? Now successful operations also there have been many. अभी मैं ये नंबर नहीं बता पाऊंगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. But then, yeah, there were many. Endless. Endless is not a word, but there is an end to everything. But there have been successful operations. I would say out of 100%, close to about 15 to 20% has been successful. But you'll have to rigorously keep doing what you do. So, डर लगता है? डर, see, now fear is a very important emotion. It's a feeling. Very important. Let's talk about fear. अगर आप पूछोगे कि ऑपरेशंस करने में डर लगता है, the answer is no. Okay. ठीक है. That is it doesn't fit in. क्योंकि fear जो है in army there is no psychological fear. Psychological fear is what is dangerous. Right? Okay. In army there is situational fear. So I will come to situational fear. जैसे? I'll come to that. है ना. But psychological fear अगर कुछ we always try to counter it. For example, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. In most paratrooper school in the world, I would say, ठीक है, अगर कुछ paratrooping is a risky activity. It is. कभी आपका parachute नहीं खुला, you could not operate your reserve या कुछ हो गया, things can go wrong. And whenever आपका कुछ हो जाता है, casualty हो जाता है, what is normally done is that the same day or the next day or the same night itself, the entire formation jumps, including the commander, including the officers, everybody jumps. Right? Now, why is that activity done? It is done so that there is no psychological fear seeping into the people. See, हमारा एक बंदा ये हो गया,
because of this activity, because of this training. That cannot happen. What happens if an operation goes wrong? Our effort is that उस बंदे को how quickly can we bring him back to operations so that psychological fear do not seep in. We cannot give that gap. उसको gap दोगे तो that thing will keep seeping in. That fear will keep seeping. So we cannot do that. So army always operates like that. कुछ हो गया तो उसको counter करने के लिए you have to bash onto that again. So that is one part. Situational fear is something जो on the spot होता है, right? जी. And in army we say fear is a good thing because it stops you from doing stupid things. ठीक है? So situational fear is a very powerful weapon if you can use it well. Okay. Now, for example, in my personal example अगर दूँ तो there were 2 instances where I almost thought that I lost my life. Now, what happened? There's of course एक में क्या हुआ था? गोली गई थी ऊपर से, and I was pinned down for a long time. So what happened at that point of time was fear. Yes, I mean nobody can deny that, right? अगर आप उठोगे तो आप लग सकता है. So डर तो लगता है उस टाइम में because you feel कि the enemy is watching you and you cannot see the enemy. Right. So that is you feel very trapped, right? And उस टाइम में क्या होता है आपका mindset जो है flight or fight mode में आ जाता है, जी, है ना? And same thing happened when during an expedition I was going for a summit. उसमें क्या होता मैं गिर गया था और एक slope था and I was sliding down. I was not stopping and then finally मेरा जो मेरा buddy था, we were roped up together. So he pulled the rope and he arrested my fall. तो उस टाइम में I stopped. तो उस टाइम में भी डर लगा था, right? There was fear. There was situation fear telling me भाई अभी क्या करना है. And fear is something that it's preparing you for the next move. Fight, flight. क्या करना है? What is it that you're going to do, right? So it is that pump of adrenaline. What is it that you have to do, right? And how you can use it better is through another very, very strong emotion, to very, very strong feeling, that is anger. Anger and fear are the 2 very dangerous feelings. It will cloud your mind. You will not be able to make decisions. But at that point of time when there is high risk, when it comes to the cost of your own life, these 2 feelings actually help me. From the flight and fight mode, it was actually anger within me from deep, inner consciousness that pushed me out, saying that, nahi yaar, I cannot get stuck here, right? I cannot get stuck here because some bloody militant is firing at me. I cannot get stuck here because I just fell from a cliff. I'll no way get stuck here. And that forced me to move out. That forced me to move out of that area. So using fear and anger in a manner where it is beneficial to you is very, very important. It's very important. I just want to understand the psychology behind. See, आपने बहुत सारी चीजों को समझाया. मैं समझना जो चाहता हूँ वो ये समझना चाहता हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग में ऐसा क्या सिखाया जाता है. Because as a civilian, what I am trying to understand is, अगर मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूं तो मेरा माइंडसेट उस टाइम पे ये होगा कि यार हो गया, वापस चलते हैं, नहीं हो पाएगा, राइट? फौज में ट्रेनिंग में ऐसा क्या सिखाया जाता है? देखिए, फौज में ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको पता है कि ट्रेनिंग इज डिफिकल्ट. आई नो. इन आर्मी, यस. नाउ व्हाई आर दोस डिफिकल्टीज एंड दोस ये सारे जो आपको कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर में रखा जाता है ना, दैट इनवेरिएबली आपके अंदर डर पैदा करता है, एंगर भी पैदा करता है, राइट? बट एट द एंड द आउटकम हैज टू बी अचीव्ड, है ना? So it is all about controlling those fears and controlling those anger. Perhaps use it in a manner to achieve what is desired. ठीक है? For example, अगर आप ना फौज में हारना मना है, ठीक है? अगर आप हार गए तो it's over, right? तो आप ट्रेनिंग में, एकेडमीज में भी अगर आप देखोगे तो if you lose, आपके सीनियर से लेके आपकी कंपनी कमांडर से लेके एवरीबॉडी विल रॉज यू, ठीक है?
So you don't want that to happen, right? Everybody wants to win, and you don't want to go through all that hassles. तो आपके constantly आपके दिमाग में वो एक डर रहता है, right? And to counter that again, they will keep telling you कि सब तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. Anger क्यों आता है? When you feel threatened, number one, and when you feel rejected, है ना? तो ये दोनों चीजें आपके उसमें डालता रहेगा कि you can't do this, you can't do that, because that creates anger, है ना? And it is that anger that pushes you to do things that is beyond your beyond imagination. There are times when you know that the goal is so difficult, but आपको वो करना है, आप कैसे करोगे उसको? Yeah, these emotions help. They're tremendously powerful. Tremendously powerful. And academies में भी वही आता है. They constantly put you under so much pressure and pain that it is these emotions, things like fear and anger actually tells you, go charge. So, serving in JNK, मतलब हमने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ पॉडकास्ट किया अभी तक, एंड व्हाट आई हैव लर्नड, I've had good conversations with Lavinder sir, and on the other hand I have had good conversations with Colonel Kashyap, one who has served in JNK and one who has been there in Northeast. अब Northeast में काम करने का तरीका और JNK में काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, राइट? JNK में कॉल ऑफ एक्शन जो है वो ज्यादातर उन लोगों के साथ है, वॉर फ्रंट, आप उस वॉर फ्रंट में हो जहां पे आप एक आउटसाइडर के साथ लड़ाई कर रहे हो. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर इन नॉर्थ ईस्ट, वहां पे आप अपने ही लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स हैं वो अपने ही लोग हैं, राइट? Yes. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? ध्रुव, आपने सही बताया कि नॉर्थ ईस्ट में हम जैसे ऑपरेट करते हैं वो कम्प्लीटली अलग है. JNK में कैसे ऑपरेट करते हैं कम्प्लीटली अलग है. बिकॉज नंबर वन तो दोनों का सिचुएशंस अलग है, राइट? एंड आप जो एनिमी इटसेल्फ जो है वो दोनों में अलग है जी, राइट? कश्मीर में जो है ज्यादातर आपका FTs बोलते हैं, फॉरेन टेररिस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो वो जब आते हैं इधर एंड दे कम विद जस्ट वन मिशन कि भाई मारना है मरना है, दैट काइंड, राइट? तो वहां पे आप when you operate there, the rules of engagement is clear. आप एम्बुश में बैठे हो, they are the guys with weapons, है ना? आप उनको ठोक सकते हो, राइट? बट here in Northeast, they're your same people, ठीक है? तो आप यहाँ पे इंसर्जेंसी जो है, it's an idea, right? And you cannot fight ideas with bullets. करेक्ट जी. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हम क्या एम्फसाइज करते हैं कि आप उनका सोच बदलना है ना? एंड आप जो लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, दे आर योर ओन पीपल, सो यू विल ऑलवेज गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर फर्स्ट. रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इज वेरी क्लियर. यू विल फायर ओनली इफ यू आर फायर्ड अपॉन, ठीक है? उसके अलावा हम सीधा जाके हम गोली नहीं मारते किसी को. हमने मिलिटेंट आइडेंटिफाई कर लिया, यस दे आर कैरिंग वेपन्स, ठीक है? Unless there is a fire, we will always give them an opportunity. There will be warnings, but we don't fire in the air. Warnings, there are other ways of giving warnings. If they don't fire, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको apprehend करें, ठीक है? Okay. But yes, moment they open fire, then that's combat scene. उसके बाद आप bring all hell loose on him. तो आप भून डालो उसको. That's a different thing altogether. But if fire नहीं खोला गया, तो it is very clear that yes, we don't want to unnecessarily take someone's life. We don't do that. तो better ये है कि if they surrender, we want them to surrender. We want them to come to mainstream. तो हम कोशिश करते हैं कि वो surrender करें. So North East में it is difficult. Plus terrain भी अलग है. आपका लैंग्वेज अलग है, काम करने का तरीका अलग होता है, इंटेल गैदरिंग का तरीका अलग होता है ना? काफी सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं. बहुत सारी चीजें सुनी सो मैंने, बट जब मैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में रिसर्च कर रहा था, आई फाउंड आउट वन थिंग विच वॉज वेरी डिफरेंट. मतलब
लोकल आदमी को सेम जगह पे पोस्टिंग नहीं होती. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप यू वर बोर्न इन गुवाहाटी, राइट, एंड यू सर्व्ड इन द नॉर्थ ईस्ट. दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन बिकॉज आर्मी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहां से इंसान होता है उसको सेम जगह पे पोस्टिंग नहीं देते. What exactly happened? That's true. It is, I would say God's grace. So I've been lucky that way. So, हाँ, I am from Northeast. मैं गुवाहाटी से हूँ. So, और मेरा maximum posting भी Northeast में ही था. तो it was a blessing for me, but at the same time, it's a double-edged weapon. क्योंकि हाँ, by virtue of me being local, वहाँ पे क्या intelligence gathering में थोड़ा help हो जाता है with local language and everything. उनका कल्चर पता है आपको, उनका लैंग्वेज पता है, उनका एवरीथिंग आप यू आर अवेयर ऑफ इट. तो becomes easy. It becomes easy. It becomes, and और पीपल जो है वो आपके साथ थोड़ा और रिलेट करेगा, बोलेगा कि ये बंदा अपना ही है ना. सो दैट वे इट्स हेल्पफुल. बट एट द सेम टाइम इट इज मतलब इसमें थोड़ा रिस्क भी है. कैसे? बिकॉज पीपल जो है आप पीपल whom you are hunting, they will try to catch your weak points. एक बार ऐसा हुआ था. I was going on leave, and then I get a call saying that अच्छा मेजर, तो आप घर जा रहे हो, है ना, आप इस रूट से जाओगे, आप यहाँ रहते हो, आपके फैमिली में ये है वो है ना. सो ठीक है, I kept quiet, सुन लिया जो सुनना था. I took a different route, घर गया, तो छुट्टी के बाद वापस आया. एंड during leave only मैंने अपने sources को activate किया, find out who this guy is, and he happened to be an ex surrendered militant. And because वहाँ पे फौज है, तो there are a lot of things that they illegally do, and they continue to extort money and things like that in the name of the organization right they used to be part of. तो वो सब बंद हो गया था हम जब थे वहाँ. तो उनका कोई इनकम नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था. तो that guy threatened me, thinking that something good will happen to them. So जैसे ही वापस आया, I found that guy. I caught that guy. I kept him in my COB, company operating base, for almost a week. ठीक से धुलाई किया उसका. And the good thing is that मेरे headquarters को ये चीज पता नहीं था. My commanding officer, he still doesn't know. And if he watches this podcast, he'll get to know कि तूने ये भी करके रखा है. But it was necessary. It was necessary to teach them a lesson. कि भाई, you don't take us for granted, and don't get into our let's keep our war to a limit. Don't take it to our family side. तो हाँ, उसको ठीक से धुलाई किया. एंड देन उनका कम्युनिटी में, उनका जो अंडरग्राउंड कम्युनिटी है, उसमें बात फैल गया था कि इसने ऐसा कुछ स्टन मारा था. मेजर ने पकड़ के इसको दिया. तो आफ्टर और सारी चीजें बंद हो गई थी. तो यस, बट it is a double-edged weapon, and not just for me. बाकी जो भी जहाँ पे काम करेंगे, if a guy from Kashmir works in Kashmir, yes, these kind of things will happen. ये होते हैं, तो फायदा उठाते हैं वो लोग, talking about your family and things like that, कि हम इसको मार देंगे, उसको मार देंगे. ये होता है. It's not just happened with me. काफी ऑफिसर्स के साथ हुआ है. So उस हिसाब से yes, it is risky, it is painful, but आपको फिर भी आपको जो करना है वो करना पड़ेगा. And you have to find your ways how to deal with it. I think that's the warrior mindset. कहीं ना कहीं जब आपकी बात में सुन रहा था ना, तो मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि you don't mess with me. Exactly. You don't fucking mess with me. You try to mess with me. You talk about my family. आजा, मैं तेरे को देख लूंगा. That is the truth. That is the mindset of the entire Indian Army. See, Indian Army is not it's not someone that you'd like to mess with. People tried, and they've got a bloody nose everywhere. You try to mess with us, we will find you who you are, whatever you are, wherever you are, we will find you, and we will kill you. We will, give you the kind of death that will shiver the souls of your ancestors. And things have happened. You've seen, recently there's a lot of things that is out in media, right? Cross-border operations and things like that. They got a bloody nose for that, and it's just some part of it. There were operations happening before also. Right. We've been conducting those kind of operations. And anywhere who challenges the idea of India, who challenges the people of India, something they do, they will get it. There is no doubt about it. And they will get it the hard way. And we are bloody good in doing what we do. We are a war machine. Our job is to kill.
right? And we do that very well. तो आप you can't mess with this army. It is as simple as that. Better don't. The same mindset अगर आप मुझे पूछोगे मेरे personal friend में भी वही हुआ था. It's the same mindset. Everybody has the same mindset. You don't mess with this. Don't touch our points that is very dear to us. This country is very dear to us. The people in this country is very dear to us. है ना? So you try to do something nasty, you will get back. You will get back very, very, very badly. आज तक कांप रहे हैं वो लोग. They could not revert back to us in any way. So yeah, that's how the army is. How was your first combat experience? कैसा था? मेरा first combat experience. क्या हुआ था exactly? चलो discuss. It is a funny story. Okay. So what happened? My first combat experience was a hand-to-hand combat experience. Okay. So there was some intel coming. तो क्या हुआ था हमें इनपुट मिला था कि वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है तो these guys what they do वो चला जाता है उधर है ना and then जब कुछ करना हो तो they come this side ठीक है and we got an input कि इस जनरल एरिया में 3 लोग जो है ऐसे ऐसे हैं तो 3 महीने से हम लोग ढूंढ रहे हैं many inputs came to us बहुत सारे एम्बुशेस लगाए काफी सारे फेलियर्स हुए I couldn't get them close to about 15 एम्बुशेस तो लगाए उनके लिए तो कभी मिला नहीं ओके तो एक एम्बुश ऐसा था कि इट वाज अ हार्ड एंड बिकॉज माय सोर्स वाज विद देम और इस बार उनको पकड़ना ही पड़ेगा तो वो लोग आए और बढ़िया सा chose a good location and told them that bring these guys through this route so आए and then I was getting live feed that ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो जैसे ही वो एम्बुश लोकेशन में आए तो everybody knows. I told them briefly that पहला बंदा जो जाएगा उसको जाने देगा ठीक है He's our source. उसके बाद बाकी जो 3 है उनको पकड़ना है तो मेरे स्टॉप्स जो आगे खड़े थे so I asked them कि what do you see so they were also confused कि हाँ मतलब 4 लोग तो जा रहे हैं but these 3 guys they were wearing jackets and things like तो पता नहीं चल रहा कि weapon है नहीं है क्या है तो and you need to identify that weapon only then you'll know that these guys are militants or whatever तो वहाँ पे लोकेशन ऐसा था कि एक साइड में जंगल था it was dense forest there was a small the foot track that was coming along और इस साइड में नीचे there was a slope और एक नदी जा रहा था so when they approached जो point of contact था वहाँ पे we challenged them तो I tried to see with my HSTIs and things like that तो weapon इतना दिखा नहीं तो we challenged them and they did not do anything they did not move तो we approached them then उसके बाद एक बंदा जो था वो भाग गया तो वही अंडरस्टूड सब कुछ तो गड़बड़ है 100% यही होगा शायद तो उसको तो पकड़ लिया मेरे सोर्सेज ने and the other 2 guys so there was me and one guy and another buddy so we jumped on these 2 guys and we nabbed them तो एक को पकड़ लिया उसके हाथ से पिस्टल निकले and the other guys also were carrying pistols and जो दूसरा बंदा जो पकड़ रहा था ना 2 of my guys one of them shouted कि साहब खंजर मार दिया and then I thought what does it mean then I tried to look back क्या था क्या नहीं था and you're screaming you're shouting कि he's trying to stab me with a knife तो मैं गया वहाँ पे I rushed to him I thought that कि हो गया अभी because अगर bleeding ज़्यादा है getting him out of that place taking him to a nearby whatever medical facility हम वहाँ पे FFD लगा के थोड़ा देर तो रोक लेंगे but I don't know कितना देर तक वो शॉक एंड वो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं रुकेगा क्या है तो बहुत गुस्सा आया था मुझे इस टाइम गेटिंग बैक टू एंगर तो आई वॉज इन फुल रेज तो मैं गया उस बंदे को पकड़ के उसको खींचा तो जैसे ही खींचा वो जो स्लोप था वहाँ पे हम दोनों गिरे एंड देन वी वर रोलिंग डाउन तो मेरा भी वेपन वहीं पे गिर गया था एंड ही वॉज ऑल्सो ब्लडी कैरिंग अ शॉटगन एंड वो भी अपना निकल गया था उसके हाथ से एंड देन वी स्टॉप नीचे जाके तो ही गॉट अप इमीडिएटली उसने मुझे दिया मतलब ही पंच मी ऑन माई फेस आई गॉट मोर एंग्री he's trying to put me down and stab me and he's trying to run away actually so I got more angry there's a lot of rage
तो उस टाइम चल रहा है नीचे, हैंड टू हैंड धाम धूम चल रहा है. He punched me, I get more angry, I punch him back, and then finally, yes, of course, I nabbed him and I was hitting him very badly. I was on tremendous rage. तो उसको मार के, and then finally, मेरे, the two of my guys, they were trying to find out कि साहब कहाँ नीचे चले गए, और नीचे से आवाज़ें आ रहे हैं. तो two of them came down and then he stopped us and then we caught him. We went up. And that time what happened? I was actually really, really clouded by this entire rage that I was going through. So there was another officer. He was senior to me that time. And then I told him कि sir, इन तीनों को यहाँ ठोक देते हैं. Because he tried to stab our guys. One of my boys would have lost him. So what happened? जब मारा था तो it went inside his hand. Okay. So he could stop. But ये पूरा मतलब penetrate हो गया था. तो middle of the jungle, ठोक देते हैं इनको, ठीक है. एंड बाय द टाइम वी कैरी द बॉडी आउट, एक दिन लग ही जाएगा, है ना. तो नोबडी नोज एनीथिंग, वी विल कुक अप अ नाइस स्टोरी एंड फिनिश देम ऑफ. बिकॉज दीज गाइज, इफ यू पुट देम इन जेल, दे विल कम आउट, दे विल डू द सेम थिंग. वो आएगा, वही सिविलियन मरेगा, है ना, वही एक्सटॉर्शन चलता रहेगा. सो लेट्स एंड इट हियर. एंड देन ही स्टॉप मी राइट देयर. ही सेड दैट, यार भास्कर, वी आर द इंडियन आर्मी एंड वी डोंट किल पीपल इन कोल्ड ब्लड. These are the exact words that he told. And he said, a heat of the moment, if something happens, you fire it back, there was a different scene. But like this, we don't operate like this. We are professional, we are a moral army. And there was a huge lesson to me. Huge lesson. That was your first mission? That was my first mission, yes. Of course, young, wild, josh, mara, dham, dhum. And अच्छा भी लगा था, Milton मार रहा हूँ दबा के, है ना. And I was on the upper edge because I have my team here, है ना. And he was alone with two of his guys. But then that that anger was clouding my mind. So that's how decision making becomes very, very difficult when you're under rage and anger, and you tend to make wrong decisions. I think that's a thin line between the wrong decision and the right decision, right? Exactly. And you need to control your rage in every operations. If any young officers are watching this now, tell them the same thing. You need to control your anger in operations. Otherwise, you'll make mistakes. So don't do that. Don't do that. And there was a lesson, and that was my first combat experience. Combat as in hand to hand chal raha tha. So it is a good operation. We got them and got warlike stores, shotguns, vagara, pistols, and all that. Couple of grenades, rounds. It was a good operation. People were happy. And I was happy because they were the same guys whom we were trying for such a long time. Oh. So finally मिल गया था. तो and it did teach me a very good lesson also. So yes. So आप ऐसे मिशंस में भी इन्वॉल्व हुए जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर गोली an inch or two ऊपर नीचे चलती तो you Yes. would have. Yes. What exactly happened? उसमें क्या हुआ था? There was a Milton whom the armed forces, the police administration, everyone was trying to get him for the past 19 years. उसको मिल नहीं रहा था. He was exceptional with his network. He was exceptional with his, the way he just hid himself in the crowd. तो and we never had a photograph of him either. वो 19 साल पुराना फोटोग्राफ था. उसके बाद और कुछ नहीं था हमारे पास इंटेल. But we were constantly searching for it, and he exactly knew कि हर कोई उसी को ढूंढ रहा है. But he would always escape. तो finally एक बार क्या हुआ था? There was we got him in one of in a particular place. Input आया, and then people rushed there. They cordoned up the place. I get a call from my CO middle of the night. He's saying that so and so पकड़ लिया हमने. He's there. आप you move with the team. तो मैं my team we moved, and then जब वहाँ पे मैं पहुँचा, and one of the cordons मेरे एक unit officer था. I asked him, what is the, give me a sit rep, क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है. तो he told me that sir, we have इनको हमने इधर इस एंगल से घेर लिया है. You've cordoned him. There is no escape on this side. But एक साउथ एक्सिस खुला हुआ है, वो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, and you have to block that. क्योंकि उस एक्सिस से वो निकल सकता है. There is high probability. तो जैसे ही वो सुना, CO को रिपोर्ट दिया, and then I was moving that side. तो जो द क्लस्टर ऑफ हाउसेज जहाँ पे वो था, तो वहाँ से उसने बर्स्ट खोल लिया एक का ठंड. एंड दैट वाज वेरी क्लोज.
very close. And probably had it been few feet or whatever, we wouldn't be doing this podcast, right? So yes, that was very, 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 very close. And like I said, I mentioned before that there was a time when I almost thought that I lost my life. So that was very close. And that was the same operation where we did the room intervention. Okay. So and then of course I gathered my team and went and did what I was supposed to do. And the next morning, we went and got the body out, who was shot the previous night. So there were a lot of firefights, and he tried to explode a lot of grenades, but then unfortunately, it didn't blast. So it was his bad luck and our good luck. It where was we got not him. his day. It was just not his day. That's what. एक और एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ था, नियर डेथ एक्सपीरियंस, दैट वाज ऑन माउंट कुन. Yes. So that was when I was in Special Operations Forces. वहाँ पे we continuously do high altitude mountaineering, and because it's a force made for extreme high altitude warfare. So mountaineering is a very it's a very important part. है ना? तो हम लोग गए थे माउंट कुन क्लाइम करने के लिए. इट इज़ 7,000 मीटर प्लस पीक है. तो फाइनल समिट डे में क्या हुआ था, रात को हम लोग निकले 12 बजे के आसपास. एंड देन वी वर क्लाइंबिंग, ठीक था, about 2-3 घंटे वी वर क्लाइंबिंग, इट वाज ऑल फाइन. तो मी 3 of us वी गॉट रोप्ड अप. तो देयर वाज वन प्लेस जहाँ पे एक देयर वाज 2-3 स्टेप्स का एक चढ़ाई था, where you have to probably just take a plunge or take a jump and then climb up. तो my buddy in front, उसने jump किया, निकल गया. तो मैंने jump किया, like second when I jumped, तो I slipped and I was just sliding down that mountain slope, a good about मतलब couple of seconds, long seconds. तो मैं नीचे जा रहा था ज़ज़ज़ करके, and I thought I was dead because I didn't know what was behind. Okay. Right, and I was just sliding down. And after some time, my buddy who was behind me, he pulled the rope and he arrested my fall, and I got stuck. The moment I got stuck, and after 1 second or so, he said that "Saab, upar aa jao." And when I heard that, then again I said, the mix of emotions of fear and anger, there was some force from within. I just उठ के ही 2 point करके I ran up. ऊपर जाके वो जो एज था उसको पकड़ के I went up. तो ठीक है, वो रात को गया. We submitted in the morning and I was coming back. So in the daylight when I was coming down, and then we stopped there and we saw the area. कि था क्या था ये? So it was a chunk of ice about 60 degrees or so, around good about 30-40 feet. और उसके बाद पूरा 2000 feet का खाई है. And I just sat down for a moment. I was like, मैंने बड़ी को बोला थैंक यू यार, तूने बचा लिया मेरे को. And probably it was your voice that somehow gave me courage. तो भगवान आया था तेरे voice में, and I somehow got the courage to climb up again. So that was a very, very close thing. So yes, that was my second near death experience, I would say. मैं भी एक बात सोच रहा था, जस्ट थिंकिंग, यार इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक स्टिल वो वॉरियर माइंडसेट के बारे में सोच के भी ना कभी कभी ऐसा लगता है कि द ट्रेनिंग माइट बी वन हेल ऑफ अ ट्रेनिंग वेयर द एंटायर माइंडसेट फ्रॉम बीइंग अ सिविलियन टू बीइंग एन ऑफिसर, अ जवान in the army, it changes. Mindset ही completely different है. See, there is no difference in mindset. It's the mindset जो हर कोई adopt कर सकता है. The mindset is simple. इसमें एक चीज़ है कि भाई the warrior mindset is based on winner's mindset. आप कितना हद तक जा सकते हो जीतने के लिए, in order to win, right? तो in the army mindset वही है कि there is, you can never say die, you cannot give up, है ना, और आपको consistently pursue करना है. So the warrior mindset is all about the winner's mindset, right? And इसमें कुछ चीज़ें हैं that see, the first thing is आपका positivity.
The positivity is all about क्या है कि if you're optimistic, है ना, in whatever comes your way, whatever. तो आपका हर कोई फेलियर हो, हर कोई कुछ हो, हर no matter how difficult it is, you'll always look it as as an opportunity. So optimism is very important. Right. In any phase, in any difficult situations, optimism चाहिए. The optimism है आपके पास तो वो positive mindset automatically आ जाता है. तो पॉजिटिविटी रहेगा आपके माइंड में, तो दैट बिल्ड्स योर विनर्स माइंडसेट. द फर्स्ट थिंग. सेकंड आपका है क्लैरिटी. You need to be absolutely clear with what you want. आपका विजन जो है, you will have to visualize कि this is the outcome. This is what I want to pursue. This is what I want to do. है ना? It is like, if you can be absolute, if mind can be absolutely silent in middle of chaos, और आप constantly अगर आप गोल के ऊपर फोकस कर सकते हो, that is clarity. It is as simple as that. If you're clear in your mind कि आपको क्या चाहिए, आपको वही मिलेगा, और उसी के तरफ आप काम करते रहोगे, है ना? So this is the second point that is very important for a winner's mindset, clarity. Third is of course passion. You have to be passionate about doing what you do. लेकिन passion का एक चीज़ है, passion doesn't come, ऐसे ही नहीं आ जाता passion. For passion to burn, the underlying factor, जो fuel है इसका, that is the purpose, cause. You have to find your why. आप क्यों कर रहे हो वो काम? If you can find your why, आप क्यों कर रहे हो वो काम, then passion वो automatically आता रहेगा. Long run में that why is going to fuel your passion, and it will burn throughout. So third is passion, and fourth is of course discipline. Discipline eats motivation for breakfast. Discipline is all about consistency. It is not being rigid. It is not being strict. It is nothing of that sort. It is all about consistently doing what you are supposed to do in order to achieve your goal. Small छोटा steps आप लेते रहोगे throughout without missing any day. That is discipline. So together ये सारे चीज़ आप मिलाओगे तो आपको winners mindset automatically आ जाता है, and that winners mindset is what warriors mindset is. It's all about winning. It's all about winning. So how was it different from, in your earlier roles when you were in the forces than when you were in the special forces? What was the major difference in the roles? How did things change? See, in special forces, it is the major difference is that in special forces you are doing professional things only. You are training. Your job is to train. Your job is to operate. Okay. Training and operations, like professional stuff. People are more happy in SF. I am more happy in special forces. In ground infantry, like I said, you have to do everything professionally. There is no limit to your work. Everything under the sun, if it is given to you, it is your job. है ना? तो आपको कहीं ऑपरेशंस में डाल दिए, CI में, आपको कहीं फ्रंट में डाल दिया टू पेट्रोल सम बॉर्डर्स, आपको कहीं डिज़ास्टर रिलीफ में डाल दिया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में डाल दिया, कहीं से किसी को इवैक्यूएट करना है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस है, या एनीथिंग. Everything under the sun is your job, and you will bloody do it very, very professionally. So these are the two main. This is the main difference. I would personally, say that my time in SF was better because वहाँ पे आपका बस your focus is towards, it is unidirectional. आपका एक ही चीज़ में आपका full concentration है. तो and that is what I went to do in the army, है ना? तो मुझे वो एड्रेनलिन रश चाहिए, मुझे वो एडवेंचर चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट स्पेशल ऑपरेशंस हैज़ गिवन मी. तो हाँ, सो दैट इज़ द डिफरेंस. हियर इट इज़ मोर ऑफ ऑपरेशंस, देयर इट इज़ ग्राउंड इन्फेंट्री इज़ एवरीथिंग. अभी आपने सब बॉर्डर की बात करी. यू वर आल्सो पोस्टेड द इंडो चाइना बॉर्डर. हाउ वाज दैट लाइक? First of all, I personally don't call it Indo-China border. Okay. For me, the other side is Tibet, right? And there is a, in the army, normally we say it's Tibet Autonomous Region, on the other side. Okay. That is what the Chinese say, TAR, right? Okay. But there is a sizable population in the Indian army itself who do not like to call it as TAR. We call it as COT, China Occupied Tibet. Okay. And not just in the army, I'm sure many other people as well. Okay. Right? For us, it is an occupied country. And we don't take it as Indo-China. It is a Tibetan border for us.
Right? That is the first thing. Correct? And apart from that, mostly I served in the Tibetan border when I was in special operations. तो वहाँ पे काफ़ी सारे patrols होते थे. We used to go for surveillance. So there were times when we had to do certain things on the other side, get some intel. तो हाँ वो सब we would do, and obviously मतलब उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता. Talking about army, there's a question that always comes out is weapons. What was your favorite weapon? My favorite weapon has always been the Kalashnikov 47. I love that weapon because that is a weapon that is, you can say it is a no problem weapon. आप उसको पानी में डाल दो, मड में डाल दो, आग में डाल दो, that thing will fire. It has got very less stoppages. तो and it fires a 7.62 round. तो 7.62 round is a sure shot kill. आपको वो गोली लगेगा, इतना सा छेद होगा, पीछे इतना बड़ा निकल के आएगा, है ना? So that thing is made to kill. उसके बाद में वो NATO round आया 5.56 incapacitate करने के लिए. But AK-47 has always been my favorite. And if you are proficient with that weapon, it is very handy. It's very, very handy. I love that weapon. I always carried an AK-47 because it is lethal, it is reliable, and it is very simple. It is very simple mechanism. Gas operating system is very clear. कोई problems नहीं है. Why the Americans face so much problem in Vietnam? Their M16s and all that M series were getting jammed. AKs were firing like anything. है ना? तो the main thing about war is keep things simple, keep things effective. So this is a simple weapon, effective weapon, and it is reliable, very, very reliable. What is the secondary weapon you like? Secondary, I personally never carried a secondary weapon because I relied so much on my assault rifle. But the secondary weapon is always a pistol, a 9mm that we used to carry. Pistol firing is little difficult. It is for very close quarter, But at the same time, you will have to keep distance, because the moment you come too close to a person, he can always dismantle your weapon from your hand, right? So movies में आप लोग देखते हैं कि पिस्टल से ऐसे मारा, ऐसा नहीं होता. It is very difficult to shoot with a pistol, right? Because आप beyond 10-15 meters आपका गोली अगर लग जाती है तो it's very good. I mean, you're an exceptional shooter, but otherwise it is not like that. It is difficult. But it is for closer than that. आपका primary weapon काम नहीं कर रहा है, for some reason it got jammed, immediately engaging the person with your secondary weapon, that is a pistol. Yes, it is कभी helpful. आपके साथ हुआ है कि आपका प्राइमरी वेपन जाम हो गया हो? कभी नहीं. AK will never ever betray you. But a lot of people, even Colonel Kashyap, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला that he prefers Tavor more than AKs because he doesn't like the AK. और बहुत सारे लोग ये बात बोलते भी हैं कि यार Some people, see, it depends. Everybody has got their own way of functioning. अभी some people don't like it. Reason being उसका जो cocking mechanism है, that is on one side. The changing lever is on the same side. ठीक है? तो तीनों चीजें दोनों चीजें एक साइड में है. So they find it little difficult कि आप trigger से हाथ निकाल के आपको वो करना पड़ेगा and things like that. But when I used to carry a AK in CI operations, it depends on your threat perception कि आपके chamber में round होगा, नहीं होगा, या क्या करोगे. So when threat perception, let's say, is medium, है ना, तो you will notice कभी अगर आप photos वगैरह देखोगे, so people who carry an AK and they are not carrying a round in the chamber, they will not have their hand on near the trigger. ठीक है? तो वो होता है कहीं पे बीच में, जहाँ एक उंगली उसका कॉकिंग लीवर में रहता है एंड उसका जो थंब है इट स्टेज इन द चेंजिंग लीवर. सो इट टेक्स लेस देन अ सेकेंड फॉर योर हैंड टू change your changing lever, pull the cocking mechanism and bring your finger to the trigger. So if you practice it, we used to practice like that. In my team, रात को ना आप उनके बैरिक्स के पास जाओगे तो खड़ा करो आवाजें आते रहते हैं. How fast they can do that, together, changing lever, on safety off, cock, in your आपका जो trigger है, sorry, your finger
on the trigger. So it's a matter of seconds, less than seconds. So people who are comfortable with it, they go for the AK. So just it's a very हो सकता है कि I might also be wrong. Is there a left-handed or a right-handed thing when you handle a weapon? It's called ambidextrous firing. So all the weapons are made the same way, but you will have to train yourself to operate with your right and your left both. So हम लोग करते हैं in combat shooting, we practice with both our hands. So that's part of training. So what was the most, like the funniest and most memorable moment from your army days? There might be many, right? Funniest. Okay. So क्या हुआ था? The one thing that I can remember is ये पैरा प्रोबेशन में हुआ था. So what they do is towards the middle of your probation वो आपको एक बोलेंगे कि go get a pet for yourself, right? तो and then what happens, they in order to towards the end you maintain that pet, आप उसको खिलाओगे पिलाओगे आराम से रखोगे, and towards the end वो बोलेगा कि आप इसको डिनर बनाओ इसका. ठीक है. So that is basically to keep you detached from emotional feelings. तो मुझे ये चीज़ पता था. अभी पहले क्या था कि ब्रेकफास्ट में ना रोज क्या होता था, प्रोफेशन में आपको टाइम नहीं मिलता. 2 रोटी अपने चबा लिया और निकल गए रेंज में. तो रेंज में जैसे ही पहुंचता हूँ तो दे से इधर हाँ ये 2 दे टू कीप स्नेक्स फॉर मी. तो वो 2 स्नेक लेके उसको मार के ना उसको थोड़ा रोस्ट करके पॉकेट में रखता था. तो देयर वाज माय दिन भर का प्रोटीन. तो उसको निकाल के अब खाते रहो. आई गेट वेरी अनॉयड. क्या रोज वही सांप चबा रहा हूँ मैं. तो इनिशियली आई थॉट सांप पकड़ते हैं उसको रखूँगा मैं. तो मैं रेंज गया, काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला मुझे. एंड इट वाज प्रीटी लेट इन द नाइट. क्या करूँ. तो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने देखा कमांडर के घर में अपने वहाँ पे रैबिट्स हैं. तो उधर गया, उधर सेटिंग किया मैंने. तो जाके मैंने रैबिट उठा के लाया, उसको रखा बढ़िया से. ओके नेक्स्ट डे लाइक वाह वी गॉट अ पेट, वेरी नाइस, इसको ठीक से रखो. अच्छा रखूँगा. एवरीथिंग वाज फाइन. तो टुवर्ड्स द एंड आफ्टर अबाउट अ मंथ और सो उन्होंने बोला हाँ सो टुडे इज़ द डे, आप इसका डिनर बनाओ, बढ़िया पकौड़ा बनाओ एंड देन गिव अस ऑल्सो, है ना, यू ऑल्सो एन्जॉय. मैं सर ठीक है सर. तो देन दे आस्क्ड मी सो वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम. तो मैंने बोला सर ये कमांडर का घर का है. उसके बाद द वे दे रॉजर्ड, ओह माय गॉड. तो इट वाज फनी आल्सो एट द सेम टाइम एंड ठीक है, आई मीन दे आल्सो टुक इट एज फन ओनली, बट हाँ इट वाज रियली फनी. इट वाज रियली. फिर वो खरगोश खाया गया है? नहीं उसको बाइज्जत वहां जाके रखा गया पूरे फुल ऑनर्स के साथ. तो दैट वाज फनी. यस. कभी आपने कोई रूल ब्रेक किया है ड्यूरिंग द टाइम यू वर सर्विंग, और क्या पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? यार रूल ब्रेक तो हर कोई करता है, ठीक है. पकड़े जाओगे तो आप खाओगे, है ना. सो राइट फ्रॉम एकेडमी डेज देयर आर सो मेनी रूल्स दैट यू नोइंगली अननोइंगली यू ब्रेक. तो रगड़ता रहेगा, वो मिलता रहेगा, आपको पनिशमेंट मिलते रहेंगे. लाइकवाइज इन सर्विस लाइफ ऑल्सो छोटे मोटे रूल्स इधर उधर वी ऑल ह्यूमन बींग्स होता रहता है. बट एज फार एज मिलिट्री डिसिप्लिन इज कंसर्न, जो होना है वो होना है. अगर पकड़ा गया तो जवाबी कार्रवाई होगी, अगर नहीं गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैं ऐसा कोई मेजर रूल ऐसा कुछ ब्रेक नहीं किया मैंने. आप भी ना कुछ सोच रहे. दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है सर. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोइंग इनसाइड हेड की रूल तो ये वाला भी था, ये भी था, ये भी था. ऐसा कुछ नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ, बट ठीक है. हाँ. How much does an army officer make? That's a big question because a lot of people comment sections में भी बहुत लोगों ने पिछले podcast में they were asking यार how much does a army officer earn? See, I can tell you about major level income. So you just get a little over 1 lakh. ठीक है. But that is just a pay that they're giving you. Apart from that, there are so many other things. The subsidized rates that you're getting in CSDs, the other facilities that you are getting, the infrastructure that you are getting. So those things, you normally would pay a very hefty amount in civil streets. तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो we are given whatever is necessary for us to sustain ourselves. That's good enough. There is no problem with that. So if somebody has to ask कि army officer कितना salary मिलता है and I want to join the army for the salary, then I'm sorry, आप मत आइए. The armed forces is not for the money. It's a way of life.
एंड इट्स अ कमिटमेंट. आप यहाँ पे सैलरी के लिए नहीं आ रहे हो. यू विल रेस्ट अश्योर्ड, आपको एक लाइफ मिलेगी दैट यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स. ठीक है. बट एट द सेम टाइम coming here looking for pay package, sorry, this is not the place. This is not the place. सर आपने परमानेंट कमीशन क्यों नहीं Yeah, apply किया? I did not apply for permanent commission because of two reasons. One, of course, in the personal front. The second is, obviously, you'll miss the action. What I mean by missing the action is, आपका जो initial 10-12 साल का service होता है ना, that is where you are actively participating in field. You are leading men, going into combat, commanding them, doing missions, conducting operations. तो वो 12 साल के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है. And then it becomes more of a desk job. आप 2IC बन जाते हो, फिर CO बन जाओगे. Even though till CO to some level, yes, soldiering ends with CO. उसके बाद तो सारा का सारा आपका staff work ही है. So that adrenal rush goes down. That the जो operations में आप जितना actively participate करते हो in initial 10-12 years, वो बाद में ख़त्म हो जाता है. So and that is where we need young professionals to do those kind of job, है ना. तो आपका उम्र के हिसाब से भी वो ठीक है. And if you're looking for that kind of life, for me, मैं फौज में गया था because of this entire will to see adventure in action. मेरे दिमाग में और कुछ दूसरा नहीं था. वो पे आ रहा है नहीं आ रहा है, अलाउंस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब मेरे दिमाग में था ही नहीं. As long as I'm getting to do what I want to do. So that वो जब तक that the adrenal rush that I got throughout, and army has been really kind to me, that it has given me more than I ever could expect. And I've done all those things that I always wanted to do. You name it, everything. You climb mountains, jumping off airplanes, everything. Hunting men. So सब कुछ तो किया मैंने. वैसे सर इट्स टू अर्ली टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट ट्रांजिशन कैसा है आफ्टर रिटायरमेंट? कैसा फील हो रहा है? हाउ इज द फीलिंग? ट्रांजिशन जो फेज है, क्योंकि अभी आपने मार्च 24 में ही आपने रिटायरमेंट लिया. यू जस्ट लिविंग अ सिविलियन लाइफ आफ्टर बीइंग इन द मिलिट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क सिविलियन लाइफ के बाद मिलिट्री लाइफ में आके तो चेंज आता है, राइट? बट मिलिट्री लाइफ को छोड़ के सिविलियन लाइफ में वापस आना कैसा लगता है? See, first thing, we are very adaptable. Okay. So before joining the army, I was a civilian, right? But yes, the day you come out of the army, for me personally, initial few months was very difficult. Very difficult because I was somehow not adjusting यार. मतलब हो नहीं रहा था. For me, life started in morning 5 यार. है ना? That is how army life is. You are fully active. यहाँ पे बाहर आके देखा 9-10 बजे तक कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, लोग निकलते ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा है. Nobody is there in office. 9-10 बजे तक तो हमारा आधा काम ऑफिस में खत्म हो जाता है. फिर मॉर्निंग का जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे आके तो yes, initially it was really difficult, and I was really missing Action. Missing action. So I'm missing it even now, and I will always miss, because that is something that I'll never get back, right? Operations and action. But yes, getting into the civil life, initial few months was difficult, but now I'm slowly getting used to it. ठीक है, अभी हो जाएगा. We are adaptable people. So one life lesson. I think you've got a lot of lessons, a lot of life lessons while you served. One life lesson जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो, that you've learned from the military, the services. One life lesson that I would like to talk about is you need to invest on your mind. Reason being, मैं जब when I started trying for Forge, from even before entering Forge, I was getting impacted. मेरा mindset कैसा होना चाहिए? And it is a constant training, right from failures to facing your fears to making habits and patterns and everything, है ना. ये सारे चीज़ें आप अपने आपका जो mindset है उसको develop करने में लगता है. जी. ठीक है. And
investing in your mind is the most important thing. अगर आप देखोगे तो even in when people are selecting you for the army, वो क्या देख रहे हैं आपका? आपका दिमाग ही तो देख रहा है, आपका mindset देख रहा है, आपका psychology देख रहा है, right? Nobody is asking you for your marks. When I went for interview, nobody asked me कि तुम्हारा कितने नंबर आए, कितना क्या क्या किया जिंदगी में, ये वो कुछ नहीं. They want to know at present आप कौन हो and what you probably will become. That is how they gaze you, and for that they just constantly test your psychology कि mind कैसा है आपका. तो mindset is important. A million strong army believes कि हमारे जो leaders हैं, for them the most important thing is the mind, right? तो constantly please invest on training your mind, and mind it can be an organ, but at the end of the day it works like a muscle. Right. आप इसको जितना train करोगे, it will become that. So if you want to become a particular kind of person, आप उस direction की तरफ आप with full focus, commitment and dedication अगर आप चल पड़े, तो you will be that person no matter what. And that is why human beings are the most dominant species on earth. We are the weakest amongst all the animals, but we are dominating the world. Why? Because of our mind. So please, आप अपने mind को train करने में, spend maximum time and effort for that. Everything else is, it's ancillary. आपका number हो गया, आपका कुछ additional activities हो गए, आपको ये पता है, language पता है, these, whatever. Everything else is, ancillary. At the end, it is your mindset. So what advice would you like to give to people who want to join, young chaps who want to join the military? I would like to tell them that, please work on 3 basic things that will help you with your leadership qualities. Number 1 is character. Because at the end of the day, आप जो leadership है, leadership is the ability to inspire. You will have to inspire others. Only if they're inspired, they will follow you. ठीक है. और उसके लिए आपको पहला चीज़ जो आपको चाहिए वो है character. You need to be a morally upright character. कोई भी बंदा अगर आप dishonest हो आपको follow नहीं करेगा. True. If you are selfish, कोई भी आपको follow नहीं करेगा. They will not get inspired by you. Correct. Second is of course professional competence. आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, प्लीज़ बी सीरियस विद इट. क्योंकि आप जब एसएसबी में आओगे वो सवाल भी ऐसे ही पूछेंगे जो आप अभी कर रहे हो. इफ़ यू आर लेट्स से यू आर पॉडकास्ट होस्ट, आपको उसी के बारे में पूछेंगे. ठीक है. एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ सीरियस आर यू एंड हाउ कॉम्पिटेंट आर यू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. ओनली देन दे विल टेल कि भाई हाँ ये बंदा जो है फौज में जाके भी ही विल बी सीरियस विद इट एंड ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉम्पिटेंट. And only if you are professionally competent, आपका जो followers है, they will come up to you, है ना, they will look up to you कि भाई this guy can give us solutions. ये बंदा जो है ये कर लेगा, let's go to him. That again goes back to inspiration. That is how you can inspire people. And third is of course your emotional intelligence. You need to be very, very intelligent emotionally. It is not about being emotional. It is about understanding your own emotions, and it is about understanding other people's emotions. You have to understand your own emotions because अगर आप अपना खुद का biases को नहीं तोड़ोगे, है ना, you will not be able to make good decisions. You will not be able to make proper judgments. आप पहले ही जज कर लेते हो कि ये बंदा ऐसा है वैसा है वैसे, you will come up with wrong decisions, right? A jawan comes to you saying कि साहब मुझे छुट्टी जाना है for 10 days because of so and so reason. वो let's say he's just come back from leave but he has to go again. तो आप until unless you understand कि how important that thing is for him. आपके लिए हो सकता है कि it's not important, but for him, for his upbringing, for his interaction with his environment, it may be a very important thing for him to go on leave. आप उस टाइम अगर बोलो कि नहीं जाना है, आप नहीं भेजूंगा because just come back from leave. See, those things are not going to bear fruit, right? So you have to understand other people's emotions as well. And so these 3 things, if you keep in mind, आपका ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा. एंड इट इज़ एन ओवरऑल गुड पर्सनैलिटी दैट आर्म्ड फोर्सेस इज लुकिंग एट. आप ये बेसिक चीज़ें हैं एंड दैट टर्निंग यू इनटू द अल्फा वुल्फ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So after leaving the army, you started a tour and travel company. इसके पीछे क्या thought है? And you have also started, with the corporate personal training. development courses and
motivational and team building exercises and other things that you have started. What was the thought behind that? The thought behind that regarding my tours and travels company, because I have went across Northeast extensively. I've been to places where nobody has even seen, probably not even on internet, nowhere else. So after looking all and the way infrastructure development is happening in Northeast, I'm sure that this is a field, where I can contribute. So इसलिए, I know how beautiful Northeast is. So It is. So It is I've very seen it beautiful. extensively. So yes, that is the whole idea behind opening a company on tours and travels. Second, on my company on corporate training, the things that I've learned throughout in the army, I think this is the best way I can give it to somebody else. Anything regarding team building and leadership, like I said, Indian Army is an organization that is probably the highest performing organization in the world. This is the organization with maximum productivity. So how do we do that? Now, what are the things behind it? So if I can, articulate these things and give it to others, they can use that in their organizations, right? And that's how they can improve. So I opened this corporate training company as well. That's great. So before we come to an end to today's podcast, there are a lot of people who feel lost and are searching for a purpose. One advice for all the people, who think that they're lost somewhere and they are searching for a purpose in life. See, being lost is fine, first of all. I was lost as well. I was lost. I didn't know what to do with my career. But it is very important that, like I said, आपको आपका why ढूंढना पड़ेगा. Whatever you're looking for, अगर आपको आपका reason मिल जाता है, you will come out of it. You will come out of it. You will move towards from loss to victory. Automatically वो transition आ जाएगा. But first, you'll have to find out your purpose. आप क्या चीज़ किस लिए करना चाहते हो? Whatever you want to do in life. You may get lost because something is not happening, right? आप कोशिश कर रहे हो, but it's not happening. Why is not happening? Because till now आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिला. You haven't found your answer to your why. इसीलिए आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है and you are lost, right? So focus on why do you want to do it. That is very important. Purpose is very important. Find your purpose for whatever you're doing. You will automatically, find your way. It is very simple. Wow. Thank you so much, sir, for coming for the podcast today and all the insights that you have given us. And thank you so much for serving the nation and making sure that we stay safe. Thank you, sir. Thank you, Dhruv. Thank you so much. And you thanking me for my service, I would say, Dhruv, you are worth fighting for. The people of this country is worth fighting for. This country is worth fighting for. So thank you for appreciating our service. And thank you so much.